Okay, good morning, students. Welcome to today's lecture. So, capillary is nothing but it was the phenomena of rise or fall in the level of liquid when a pipe of small diameter. Okay, generally this diameter of the pipe is less than or equal to 5 mm. So, you will observe whether either the level of liquid will rise in the tube or level of liquid will fall in the tube. Okay, so this phenomena is nothing but capillarity rise or fall. We had seen that whenever the cohesive forces between liquid, okay, sorry, when the adhesive forces between force of adhesion between liquid and solid, it is greater than the force of cohesion between liquid and liquid. In this case, the liquid will rise, and when the liquid is rising, its weight is also acting in downward direction. Okay, so the net force which is rising the liquid, it will be adhesive force minus cohesive force. So this Fa minus Fc, so it will going to rise. Okay, and when it is rising, the weight of the liquid is also acting in downward direction. Okay, so when these two become equal, so the rise of liquid level, it will stop. Okay, and I think we had also seen the derivation for that. Similarly, whenever there is some fluids, for example, mercury. So if you insert a glass tube in mercury, you observe the force of cohesion, it is greater or it is stronger than force of adhesion between mercury molecules and glass. So in this case, the level of liquid will not rise, the level of liquid will fall. So this is called as capillarity depression. Okay, after that, whenever the liquid rise from the upward, the shape of this meniscus, it is convex. Okay, so the shape of the meniscus is convex upward. Then if you draw a tangent from this point of contact, okay, यहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो ग्लास ट्यूब को कांटेक्ट होता है, वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया. Okay, so it will make an angle theta with vertical. So this angle is called as angle of contact. So angle of contact theta, it is less than 90 degree in case of capillarity rise. Okay, and in case of capillarity fall, this angle, it is more than 90 degree. The capillarity rise, it is given by 4 sigma cos theta upon rho GD. Okay, 4 sigma cos theta upon rho GD. Here sigma is nothing but surface tension of that given liquid, theta is nothing but angle of contact, rho is mass density of that fluid, g is acceleration due to gravity, and d is diameter of capillary. Okay, so today we will solve one numerical on capillarity rise. Quickly we will see first numerical. Calculate the capillary rise in a glass tube. Calculate the capillary rise in a glass tube of 2.5 mm diameter when immersed vertically in A water and B mercury. Okay, so basically a problem there are two problems. First case, the capillary is immersed in water. In second case, the capillary immersed in mercury. Take surface tension sigma. Sigma equals to 0.0725 Newton per meter for water, and sigma is equal to 0.52, and sigma equals to 0.52 Newton per meter for mercury in contact with air. The specific gravity of mercury is taken as 13.6 and angle of contact is equal to 130 degree. So we'll see the solution. So what is given in this problem, there is a capillary tube, okay, जिसका diameter है 2.5 mm. So 2.5 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, so 2.5 into 10 power minus 3 मीटर ये immersed किया है. First in case 1 it is immersed in water, in case 2 it is immersed in mercury. तो जब वाटर में इमर्स किया है तो बेसिकली सिग्मा ऑफ वाटर इज 0.0725 न्यूटन पर मीटर. जब मर्क्यूरी में इंसर्ट किया तो 0.52 न्यूटन पर मीटर, एंड स्पेसिफिक gravity of mercury 13.6 and angle is 130 degree. So first of all we will see capillary rise for water. So remember, for water angle of contact theta is 0 degree. Okay, so put all this value in the formula. So we know sigma equals to 4 sigma cos theta upon rho GD. अभी cos थीटा का वैल्यू कितना है 0, सो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1. तो यहाँ पे cos 0 लिखा तो भी चलेगा और डायरेक्ट स्किप किया तो भी चलेगा. ओके, बिकॉज cos 0 का वैल्यू 1 ही होता है. So it is simply 4 sigma upon rho GD. Okay, so
put all the values. So it is 4 into 2.5 into 10 power minus 3 divided by specific mass density of water is 1000 into 9.81 into sorry 4 into कितना था 0.0725 divided by 1000 into 9.81 into 2.5 into 10 power minus 3. Okay, so सारे values put करो and calculate the value of h. Okay, so 4 into 0.0725 divided by 1000 into 9.81 into 2.5 into 10 power minus 3. Putting the value, it is 0.0118 meter. Okay, after that solve the same problem for mercury. So remember, for mercury, angle of contact is taken, so it is cos 130 degree. So it is 4 into 0.52 into cos of 130 divided by हमें mass density नहीं दिया है, specific gravity दिया है. So we know specific gravity equals to mass density of mercury upon mass density of water. Okay, so mass density of water specific gravity ना multiply होना. So it is 13.6 into 1000 into 9.81 value of g into 2.5 into 10 power minus 3. Okay, so put all the values. So answer is minus 0.004 meter. Now we will see the remaining properties and we will try to complete our unit number 1 today. So the next property which we are going to see, that is bulk modulus and compressibility. Okay, so I think this bulk modulus already we had learned in solid mechanics. Here there the definition of bulk modulus denoted by K for solid. So it was the ratio of uh, applied stress to volumetric strain. Okay, whenever a stress is applied or force is applied, so force per unit area stress, so that stress applied, and because of that stress, what is the change in total volume per unit volume, volumetric strain. Okay, here in case of fluid, the definition is different. Instead of stress, here we are going to apply or we are going to consider change in pressure. Okay, so consider this is any mass of fluid, imaginary mass of fluid in the form of parallelepiped or cubic form. Okay, ये हम assume कर रहे हैं कि कोई भी cubic volume of फ्लूइड है, इस पे हम सारे डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई करेंगे. ओके, वी विल अप्लाई द इक्वल प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड. सो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम रिड्यूस होगा. न्यू वॉल्यूम विल बी लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द न्यू वॉल्यूम विच इज शोन. ओके, so this is the new volume. So whatever this change in volume to original volume, okay, change in volume dV upon V, so this is called as volumetric strain. Okay, change in volume to original volume, this is called as volumetric strain. Okay, so ये volumetric strain के लिए आपने कितना change in pressure किया है. Okay, dP. Initial pressure was suppose P0. जब उसका वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम V था तब उसका प्रेशर P0 था. हमने अभी प्रेशर अप्लाई किया P1, तो P1 प्रेशर अप्लाई करने के कारण उसका नया वॉल्यूम स्मॉल हो गया. तो जितना भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर dP. Okay, so this ratio of change in pressure of the fluid to its volumetric strain, so this is called as bulk modulus and it is denoted by K. Okay, यहाँ पे भी K से डिनोट होता है, सॉलिड मैकेनिक्स में भी K से डिनोट था, बट वहाँ पे whatever the it was the ratio of stress to volumetric strain. यहाँ पे रेशियो है change in pressure to volumetric strain of the fluid. Okay, so थोड़ा सा डेफिनेशन डिफरेंट है. Okay, so you can see in this diagram, this is an imaginary volume. We are applying the pressure P. So whatever the change in volume to original volume is, well, volumetric strain V, EV. Okay, so the ratio of change in pressure to volumetric strain, it is denoted by a bulk modulus denoted by K. So K equals to change in pressure upon volumetric strain. So dP equals to minus dV by V. Okay, so remember here negative sign indicates whenever the pressure increases, volume decreases. Okay, जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है, और जब हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होता है. ओके, सो हियर नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स volume decreases whenever the pressure increases. Okay, after that remember the value of K of water. Okay, for water the bulk modulus is 2.05 into 10 power 9 Newton per meter square. Okay, similarly आप एयर का वैल्यू देखोगे K for air. So K
for air is 1.02 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आप जस्ट अभी देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर का वैल्यू 10⁵ में है एंड वाटर का वैल्यू 10⁹ में। ओके, सो वाटर का वैल्यू 10⁴ टाइम्स। ओके, और यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई है, तो 10⁴ इंटू 2 मतलब 20,000 टाइम्स। ओके, वाटर का वैल्यू एयर के वैल्यू से 20,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। ओके, after that the next property is compressibility. So compressibility is simply defined as inverse of bulk modulus. Okay, हमने bulk modulus क्यों देखा, बिकॉज हमें compressibility देखना था। compressibility का डेफिनेशन है simply it is inverse of bulk modulus. Okay, so bulk modulus को आपने इनवर्स किया 1/k किया तो आपको compressibility मिलेगा। okay, और सिंपल लैंग्वेज में compressibility is nothing but ability of the fluid to get compressed. okay, कोई भी आप सपोज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहे हो। ओके, कंसीडर एनी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, इसमें फ्लूइड है। ओके, इसमें एनी फ्लूइड है जिसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है और V और P है और V1 और P1 है। ओके, और इस पे आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली अब ये फ्लूइड के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कौन सा फ्लूइड है। ओके, देयर विल बी सम फ्लूइड आप प्रेशर फोर्स एफ अप्लाई करोगे तो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एयर, और देयर विल बी सम फ्लूइड सच एज वाटर जिसको आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उनका वॉल्यूम इतना कुछ चेंज नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा बट वॉल्यूम थोड़ा ही चेंज होगा। ओके, सो compressibility is nothing but it is ability of the fluid to get compressed on the application of force. Okay, and mathematically जो आपका compressibility होता है that is 1/bulk modulus. Okay, that means आपका we can say compressibility C is 1/k, 1/k, or 1/k is nothing but dV upon V upon pressure, change in pressure. Okay, so that means suppose small change of pressure के लिए small आपका वॉल्यूम चेंज होता है। ओके, सो बेसिकली दैट फ्लूइड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल, वो फ्लूइड ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है। और स्मॉल चेंज इन प्रेशर के लिए आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ओके, सो दैट फ्लूइड इज हाईली कंप्रेसिबल। ओके, so based on this property of compressibility the fluids are classified as compressible fluid and incompressible fluid. Okay, so हम compressibility का definition ये वैल्यू से भी देख सकते हैं। एयर जो है और वाटर जो है, वाटर का जो K का वैल्यू है वो 20,000 टाइम्स बिगर है। ओके, इट इज 20,000 टाइम्स बिगर देन K फॉर एयर। Okay, so this is the reason why air is highly compressible and water is highly incompressible, because 1/ इनवर्स करेंगे ना तो ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा और इसको 1/ करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा रहेगा। ओके, सो एयर इज हाईली compressible and water is highly incompressible in nature. Okay, so as K of water is very high as compared to K of air, therefore water is less compressible in than air, or water is 20,000 times less compressible than air. Therefore water is treated as incompressible fluid and air is treated as compressible fluid. Okay, after that the next property which we are going to see, that is called as vapor pressure. Okay, so vapor pressure is simply the partial pressure exerted by the vapor molecule on the liquid surface in a closed container. Okay, so इसको समझने के लिए हम एक फेनोमेना समझेंगे। सपोज दिस इज एनी क्लोज कंटेनर। ओके, ये कंटेनर है, कंटेनर में आपने सपोज कोई फ्लूइड लिया सच एज वाटर। ओके, और उसका जो ऊपर का लीड जो है वो कंप्लीटली क्लोज कर दिया। ओके, सो इट इज इन क्लोज सिस्टम। Now what happens initially? Okay, now what happens initially? Initially the rate of evaporation of water. Now see, water के surface पे दो phenomena होते हैं, one is evaporation and second is condensation. अब evaporation में क्या होता है कि जो liquid surface पे जो molecules है वो heat absorb करते हैं और वो vapor में form होते हैं। और condensation में क्या होता है, जो आपके जो
वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट रिलीज करते हैं और वो लिक्विड में कंडेंस्ड होके लिक्विड सरफेस के थ्रू एंटर होते हैं. ओके, सो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली evaporation rate of evaporation is high as compared to rate of condensation. तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, आपके जो ये जो ऊपर का वॉल्यूम है एयर का, वहां पे वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज होगा. ओके, सो आपके जो वेपर्स है, वेपर्स का क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा और कुछ देर के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाएगा. तो एट दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन इज सेम. ओके, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि जितने वेपर्स लीव कर रहे हैं सेम वेपर्स एंटर करेंगे, जितना कंडेंसेशन हो रहा है उतना इवापोरेशन होगा. ओके, सो इस पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, उस पॉइंट पे आपका जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. ओके, अभी आपको आई थिंक डेल्टन पार्शियल लॉ पता है. सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड on the liquid surface, okay, P total, it is nothing but it is a sum of partial pressure exerted by all the component of air. Okay, अभी एयर में एक्चुअली ऑक्सीजन रहेगा, सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर प्लस एयर में नाइट्रोजन रहेगा, सो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर. ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा एंड वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड के वेपर्स रहेंगे. ओके, तो जितना पार्शियल प्रेशर वेपर एग्जर्ट कर रहा है, ओके, वेपर मॉलिक्यूल जितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, सो उसी को हम उसका वेपर प्रेशर बोलेंगे. ओके, सो द डेफिनेशन इज व्हाट, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस इन अ क्लोज कंटेनर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट वेपर प्रेशर. आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गया आप सबको. तो partial pressure exerted by the vapor molecule of the liquid on the same liquid surface when it is taken in a closed container. So that is nothing but vapor pressure. Okay, so ये phenomena अभी हमने देखा था. Initially rate of evaporation is more and condensation is less, but after some time equilibrium is reached when rate of evaporation and condensation are same. So at that point whatever the vapor exerts the pressure on liquid surface, so that is called as vapor pressure. Okay, now remember the value of vapor pressure for water at 100 degree Celsius is 1 bar. Okay, 100 degree Celsius पे water का value कितना है, 1 bar है. So this is the reason why आप open atmospheric pressure which is 1 bar, atmospheric pressure पे जब आप water को hit करोगे तो water 100 degree Celsius पे boil होगा. Okay, remember vapor pressure is also defined as the pressure at which the liquid starts to boil. Okay, कभी आपने कोई भी लिक्विड का आपने क्लोज सिस्टम में लिक्विड लिया और उसका प्रेशर रिड्यूस करते गए और उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू पे रीच हो गए, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू पे वो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है. ओके, सो वेपर प्रेशर इज आल्सो द वैल्यू ऑफ प्रेशर इफ अप्लाइड टू द सिस्टम, देन द वेपर लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉईल. ओके, नाउ बेसिकली आपने ऑलरेडी एक एग्जांपल देखा है प्रेशर कुकर का. प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में हम एक्सटर्नल हीट सप्लाई करते हैं. सो एक्सटर्नल हीट सप्लाई करने के कारण बेसिकली कुछ वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और जो हमारा क्लोज कंटेनर होता है प्रेशर कुकर का, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो काउंट होता है वेपर का वो इंक्रीज होते जाता है. तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, सो बेसिकली वहाँ पे जो प्रेशर फ्लूइड के ऊपर अप्लाई, लिक्विड सरफेस पे अप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज होता है. ओके, सो जब ये इंक्रीज होगा तो बेसिकली ये वैल्यू जो है वेपर प्रेशर की वैल्यू की तरह रीच होगा. so, जब ये वेपर प्रेशर की वैल्यू की तरफ रीच होता है, सो बेसिकली कम हीट पे आपका वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर प्रेशर कुकर. ओके, सो हम वेपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मतलब प्रेशर ऑफ वेपर इंक्रीज करते हैं और वो जैसे जैसे वेपर प्रेशर के पास जाता है कम टेम्परेचर पे लिक्विड आपका बॉईल होता है. सो बेसिकली 1 बार प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होगा. यही प्रेशर आपने 2 बार 3 बार कर दिया तो वाटर जो है वो 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा. ओके, so water vaporizes at 1 bar. Okay, after that remember, more the vapor pressure of the fluid, more volatile is the fluid. Okay, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर रहेगा फ्लूइड का उतना ज्यादा फ्लूइड वेपराइज होगा, वोलेटाइल रहेगा. ओके, रिमेंबर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. सो दिस इज द रीजन व्हाई आप 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर वाटर लोगे और उसको 3 दिन तक ओपन रखोगे
तो आप ऑब्जर्व करेंगे वाटर जो है वो 10 ml 20 ml वेपराइज हुआ, बट पेट्रोल जो है वो 200 300 ml वेपराइज हो जाएंगे. ओके, सो मोर द वेपर प्रेशर, more is the rate of evaporation of the fluid. Okay, after that, example, petrol has more vapor pressure than water at atmospheric pressure, thus petrol vaporizes faster than water. Okay, after that, next note, remember the vapor pressure increases with increase in temperature. Okay, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेसिकली वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है. Okay, after that, next property is cavitation. Okay, now this cavitation, this is a phenomena which basically deals with vapor pressure. आपको vapor pressure समझाए तो आपको cavitation समझ में आएगा. Okay, now what happens in cavitation? Now consider the case of turbine या pump. Pump और turbine का case आप sorry 1 minute, I'm drawing a good diagram. Now consider the case of turbine or pump. Okay. Yeah, okay. Now consider any case for suppose flow through pipe हो रहा है या आपके टरबाइन होते हैं. टरबाइन में क्या होता है कि इनलेट पे प्रेशर ज्यादा होता है और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ वाटर मूव होता है टुवर्ड्स द सेंटर, प्रेशर रिड्यूस होता है. या फिर पंप के केस में क्या होता है, सेंटर में प्रेशर आई ऑफ इम्पेलर होता है, वहां पे प्रेशर बहुत कम होता है. ओके, सो या फिर आपका फ्लो थ्रू पाइप हो रहा है, सो फ्लो थ्रू पाइप के केस में क्या होता है कि प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर लॉसेस. ओके, जो हम आगे देखेंगे. सो सपोज फ्लो हो रहा है और प्रेशर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिड्यूस हो रहा है. रिड्यूस होते होते सपोज वो प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के वैल्यू पे रीच हो गया. Okay, suppose the pressure at any point in the given flow become equal to or less than vapor pressure. तो जब वो वेपर प्रेशर पर टच होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि लिक्विड में से कुछ बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो बॉइलिंग स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि लिक्विड में से उसके वेपर्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद दे विल फॉर्म टाइनी बबल्स लाइक दिस. ओके, सो वेरी स्मॉल वेपर बबल्स एट विल बी फॉर्म इन लो प्रेशर रीजन. नाउ ये जो वेपर बबल है इनका डेंसिटी लिक्विड से कम रहता है. ओके, सो दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द हाई प्रेशर रीजन. ओके, बेसिकली टरबाइन और पंप के केस में ये आपकी जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं या फिर केसिंग होता है, तो केसिंग तक जाते हैं या फिर टरबाइन के ब्लेड की सरफेस पे जाते हैं. ओके, और वहां पे बेसिकली वो कोलैप्स हो जाते हैं. ओके, so basically see this vapor pressure of form at very low pressure they traverse in the high pressure region और high pressure region में वो कोलैप्स हो जाते हैं. तो बेसिकली जब वो कोलैप्स होते हैं तो सराउंडिंग का फ्लूइड जो है बहुत छोटी जगह है, मतलब वेरी स्मॉल प्रेशर वैल्यू इज हाई एंड वेरी स्मॉल एरिया इज देयर. ओके, तो बेसिकली सराउंडिंग का फ्लूइड बहुत ज्यादा रश करता है वहां पे. ओके, सराउंडिंग का फ्लूइड सारे मॉलिक्यूल्स वो रीजन में बहुत स्पीड से फॉर्म करते हैं. ओके, मूव करते हैं और बेसिकली वहां पे जो इम्पैक्ट जनरेट होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है. बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे जितना फोर्स छोटे एरिया में क्रिएट होता है वैसा ही एक छोटे रीजन में सराउंडिंग का बहुत ज्यादा रश होता है, उसके कारण बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट होता है. ओके, और ये फोर्स के कारण क्या होता है कि आपका जो सपोज ये जो वेपर बबल है, ओके, ये लिक्विड में बस्ट हुआ तो बेसिकली वहां पे वाइब्रेशंस और नॉइस क्रिएट होता है. ओके, और ये सपोज लिक्विड के सॉलिड के सरफेस पे जाके बस्ट हुआ तो वहां पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वहां पे इरोजन हो जाता है. ओके, सो इरोजन होगा, पिटिंग होगा. ओके, या फिर बहुत ज्यादा कैविटीज फॉर्म होंगे और बहुत ज्यादा ये फेनोमेना कंटिन्यू होता रहा तो बेसिकली मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा. आपका ब्लेड का जो सरफेस है वो टूट जाएगा, ब्लेड टूट जाएगा, या फिर आपका केसिंग है तो केसिंग में होल हो जाएगा. ओके, सो कंटिन्यूस कैविटेशन होता रहा तो आपका जो मैकेनिकल फेलियर ऑफ द कंपोनेंट में टेक प्लेस. ओके, सो दिस कैविटेशन इट इज अ हाईली अनडिजायरेबल फेनोमेना. ओके, ये एक अनडिजायरेबल फेनोमेना है और जब भी आप टरबाइन या पंप डिजाइन करते हो या फिर कोई भी पाइपिंग सिस्टम डिजाइन करते हो तो आपको उसके प्रेशर के कैलकुलेशन करने हैं और प्रेशर के कैलकुलेशन करते समय हरदम चेक करना है कि आपका जो गिवन
जो गिवन फ्लूइड है उसका जो वेपर प्रेशर है उसका वैल्यू कहीं पे भी रीच तो नहीं हो रहा है, कहीं पे भी वेपर प्रेशर का वैल्यू रीच हो जाएगा तो बेसिकली आपका कैविटेशन हो जाएगा, और कैविटेशन के कारण क्या होगा कि जब वो एक्चुअल वर्किंग में रहेगा सिस्टम तो महीने 2 महीने में आपका जो पाइप होगा पाइप बर्स्ट हो जाएगा, या फिर आपका टर्बाइन या फिर पंप जो है उसका मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा। ओके, so remember this, so cavitation is highly undesirable phenomena. So what is cavitation? Cavitation is nothing but it is a phenomena in which if the if at any point the pressure of the fluid become equals to or less than vapor pressure, so tiny bubbles, so the liquid starts to boil and small vapors of liquids are formed. So these vapors or bubbles, they travel in the region of high pressure. Okay, in the high pressure region, they suddenly collapse. Okay, so when they collapse, a tremendous amount of force is generated. Okay, so it may lead to vibrations and noise. And suppose if they collapse on the surface of any solid, so corrosion and erosion may take place. Okay, so it may lead to mechanical failure. Therefore, cavitation is highly undesirable phenomenon. Okay, and while designing, you should always try to avoid, you should always check the system whether the cavitation is occurring or not. Okay, so remember, cavitation is a highly undesirable phenomenon. Okay, so today we had completed our unit number 1,